Is there anyone who can help me with the entire vertical format of income statement? Little bit. If something is going wrong, I will assist them. क्या क्या आता है, कैसे आता है? Any of you? So may I say, Yeah, please. first of all, we'll be taking sales and then we'll be subtracting sales return or any allowances. Okay. Then it will be the net sales. Then we will be doing cost of production. We will be subtracting cost of production from the sales, less cost of production. Then the opening stock we will be taking. Then we will be taking the carriage inward, anything for the bringing the. That will also be a part of cost of sales only. Cost of production is also part of cost of sales only. Yes, but okay. Yeah. Then we will be taking subtracting closing stock. Same we will be doing for raw material, unfinished food, and the finished food. And then all such thing done. Then we'll be taking wages and any kind of overheads. This all done. Then we will be by subtracting cost of sales to the cost of production, we will be getting gross profit. Yeah, and then this is done. Then we will be moving to the net profit. Then first we will be taking the adding the operating income. Then we will be taking all the things like discount receipt, commission receipt, and all. Then we will be subtracting operating expenses. Then in that we will be there are three types of operating expenses. First is administration expenses. Then second is sales and distribution expenses, and the third is financial expenses. These all three we will be taking, and they all have a sub different elements. Like in the administration, we will be having that manager fees, then rent and all such things. And in selling and distribution, like salesman fees, carriage outward, and different things. And then we will be going for the finance one. In the finance, any interest, dividend, any of this we will be taking into consideration. After subtracting from operative income to the operative expenses, we will be getting operating profit. Then we will be moving ahead with we will be taking non-operative income, operating income. In that we will be getting any kind of interest which we have received. Okay, and then we will be subtracting non-operating expenses such as dividend or depreciation or many kind of non-operating expenses. Loss on sale of asset, goodwill written off, preliminary expenses written off, kind of. Then from the non-operating income, subtracting non-operating expenses, we will be getting net profit. That is before tax. Then we will be subtracting taxes or the provision of taxes. Then we will be getting net profit after tax. Okay, and then we will be having all the appropriations. We will be taking into consideration, and then our balance sheet goes to the end. Very good, excellent. What Sundar has stated just now, somewhere we have seen here. Yes. और अगर ये नहीं आता है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं आएगा, मैं आपको पहले से बोल के रखता हूँ. So it is a duty for all the children. मैंने असाइनमेंट दिया था, कितने टाइम बोला था लिखने के लिए? 5 times. 5 times. चलो बताओ किसने कितने 5 times लिखा है? Sundar excluded. But I've written 1 time. Wait, let me check. बताओ किसने लिखा है?
Ananya, keep your Not 5 times, but I have written once. नहीं, वन टाइम नहीं चलेगा. दैट्स व्हाई आपने सुंदर की तरह आंसर नहीं दिया. दूसरा जो बोलेगा वीडियो मोड ऑन करके बोलेगा, सो दैट वी कैन सी देयर असाइनमेंट हैज बीन डन ऑन. और किसी ने लिखा है? सर मैंने लिखा. हाँ बताओ, सबको दिखाओ नोटबुक, बताओ ऐसे दिखाओ नोटबुक, सबको दिखेगा. वेरी नाइस सत्यम, थोड़ा और लेके जाइए. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड. हाउ मेनी टाइम? जस्ट टर्न द पेजेस. कितनी बार लिखा आपने? तभी इन्होंने जो बोला आपको समझ में आया? सुंदर ने जितने भी चीजें बताई, वेरी गुड, एक्सेलेंट. ओके, एनीवन अदर देन सत्यम? So once again, this will be an assignment to you all. But we cannot wait. We'll be going for the next question. Question number 5 for you. आप लोग खुद से कीजिए, then I will help you. मुझे चाहिए ये सारे आइटम्स किधर आएंगे? तो सेल्स किधर आएगा बताओ? Where sales to be reflected? In the sales group. Yeah, it will be starting point. Purchases. Purchases कहाँ लिखेंगे हम? Cost of production. और cost of sales भी मान सकते हो. It's a part of cost of sales only. Cost of production is also part of cost of sales. The major heading is cost of sales. उसके अंदर में सब आते हैं. This is the main heading. Cost of production is cost of sales. ठीक है? Okay. Opening stock. Work in process. Work in process. तो उसके हेडिंग के अंदर आएगा ना. वर्क इन प्रोग्रेस करके कोई हेडिंग ही नहीं मिलता. कॉस्ट ऑफ वर्क इन गुड्स प्रोसेस. कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही आएगा. यस सर. ये तो अभी आपने देखा, इसके लिए बोला. इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा. लेस होगा, लेकिन किसमें आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स. रिटर्न इनवर्ड है क्या? मुझे ये पहले बताओ.
This is a sales return. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, ब्रैकेट में लिखो आप लोग, रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ योर आंसर. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, Operating expenses. Operating expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से हेड में जाएगा? Sales and distribution. Yes, it's a carriage on sales. Carriage inward, Cost of goods sold. sales. yes. What it is? ये है क्या? Carriage on purchases. Carriage on purchases. इसलिए carriage on sales एडमिनिस्ट्रेशन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गया, whereas carriage inward कहाँ आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स. रिटर्न आउटवर्ड, Cost of goods sold. Cost of goods sold. Subtracting from purchases. बस हाँ, minus from less purchase from return. purchase. The purchase return. Salesman salary, Operating expenses. Selling and distribution. selling and distribution. Advertisement and publicity, So selling and Salaries distribution. and distribution selling and expenses. distribution. Salesman traveling allowance, Sir, Selling and operating distribution. expenses. ऑपरेटिंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का. ठीक है, वेरी नाइस. ऑफिस सैलरी, Office Selling and administrative. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, Office and administration. Operating expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंस. कंप्यूटर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, Operating expenses. ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, Operating expenses. Operating expenses. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, Operating expenses. वेरी. बैड डेट्स, Operating expenses. Salaries and distribution expenses. Bad Selling and distribution expenses. व्हाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? Bad debts. Sir, Due पैसा to the नहीं मिले. loss during the selling and distribution process. क्यों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? सेल्स करने के लिए खर्चा किया था हमने. जल्दी बताइए. तो इसके लिए दो थॉट्स ऑफ स्कूल है. वन थॉट ऑफ स्कूल इज कंसीडरिंग बैड डेट्स एज फाइनेंशियल एक्सपेंस. आपके फाइनेंस का लॉस हो गया, नहीं आने वाला. यस. सेकेंड थॉट ऑफ स्कूल क्या बोलता है? ये क्या एक्चुअली बैड डेट्स है. बैड डेट्स मतलब बैड डेटर्स. यस और नो? बुरा डेटर जिसने पैसे नहीं दिए. ओके, डेटर्स क्यों आया? डेटर्स क्यों आया? जल्दी बताओ. सी अनम्यूट करके बोलोगे, देन ओनली आई एम गोइंग टू सी. आई एम नॉट गोइंग टू रीड योर मैसेजेस एंड ऑल. Selling. सेल्स किया इसके लिए. किस टाइप का सेल्स किया? Credit. क्रेडिट सेल्स. क्यों क्रेडिट सेल्स किया? वो कैश सेल्स के लिए रेडी नहीं था. हाँ, तो नहीं था तो भी आपने फिर क्रेडिट क्यों कर दिया? व्हाट वाज द मोटिव? नहीं था तो नहीं करना था. अगर वो रेडी नहीं था, कैश नहीं था, तो आपको नहीं सेल्स करना चाहिए था. आपने सेल्स क्यों कर दिया? We were having faith कि हमें फ्यूचर में मिलेगा. हाँ, Returns we will be getting in the future.
नहीं, क्योंकि हम अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते थे। अगर हमको सेल्स नहीं बढ़ाना था, हम क्या सेल्स करते थे? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो अल्टीमेट इसका रूट कॉज क्या है? सेल्स प्रमोशन ना? नहीं था तो हमको कैश सेल्स करना था, बट हमने तो कैश सेल्स किया नहीं। हमको सेल्स बढ़ाना था तो मैंने क्रेडिट सेल्स कर दिया। क्रेडिट सेल्स कर दिया तो वो डेटर्स, कुछ डेटर्स ने पैसे दिए, कुछ डेटर्स ने नहीं दिए। जो डेटर्स नहीं दिए, जो दिए वो गुड डेटर्स हो गए, गुड डेट्स हो गए, और जो नहीं दिए वो बैड डेट्स हो गए। समझा अभी आपको? तो सेकेंड थॉट ऑफ स्कूल ये भी बोलता है कि इट इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बोथ आर राइट। बट अगर आप जो भी लिख रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल एक्सपेंस लिख रहे हो तो आप ऐसा एक नोट लिख देने का बिफोर आंसर, अल्टरनेटिवली बैड डेट्स कैन बी टेकन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और अगर आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, एज अ नोट लिख दो बिफोर राइटिंग आंसर, अल्टरनेटिवली बैड डेट्स कैन बी टेकन एज फाइनेंशियल एक्सपेंस। इज दिस क्लियर? अरे समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes. परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ कंप्यूटर, किधर आएगा? परचेज ऑफ कंप्यूटर, This is a capital Operating expense. expense. यस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो इट विल नॉट कम, इट विल कम इन बैलेंस शीट, नॉट इन P&L, ट्रेडिंग P&L। ओके। डिविडेंड ऑफ शेयर्स, Non-operating income. Operating income. नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके। डूइंग इन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग डिविडेंड इज नॉट माय बिजनेस, ये अलग से हमने कर दिया है, इसलिए इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, Office expenses. इंटरेस्ट डेबिट, Finance expenses. absolutely right. Loss on sale of shares, Non-operating expenses. very good. So rearrange the above in vertical form. अभी सब चीज तो लिख लिया आपने, उसको वहां लिखते जाओ। ओके, so make a format and we will write
फॉर्मेट रेडी है? Yes, sir. Yes, sir. Start. First item was, sorry, sales, and then sales return. We'll take to start with sales. $75 lakhs. Sales return किधर था? Return inward. 75,000. नेट सेल कितना हो गया? 74,25,000. क्लियर है? Any doubt to anyone? अब क्या करेंगे? Less cost of goods sold. लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा. एंड विल टेक ऑल दोज आइटम्स. सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक. हाउ मच इट इज? 5 lakhs. देन आएगा परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न. परचेजेस कितना है? 50 lakhs. Then purchase return, that is return outward. Then closing carriage inward. $50,000. Then closing stock. कितना है देखो. How much you are getting? $5 lakh plus 49 lakh 50,000 म्हणजे 50 lakhs. 55 lakhs minus 7 lakh 50,000 कितना आता है? And with me it is Sachin, Ankit, Sundar, Nupur, and Satyam. Rest all putting their video mode off. I also have a complaint, Ananya, to you. This attitude of student will not
be tolerated in my lecture. Yes, sir. Kindly keep a note of it. मैं बार Sir, बार ये बोलूंगा नहीं. There sir, will I not had be marked messaged it. present, क्योंकि मेरे लिए वो absent ही है. Sir, I had written on the group we require to do these things, but they are not responding to things now. You have written, but you are not following. Sir, How I'm others not will well. follow? That is why I'm not. Even I am not well. Leader has to follow this. कितना है भाई? कैलकुलेटर लेके बैठना है तुम लोग को. 4,75,000. Yes. No, it's 00. 47,50,000. Yes, 47,50,000. तो ग्रॉस मार्जिन कितना आ जाएगा बताओ? माइनस करो. $47,50,000. So 75,25,000 minus 47,50,000. What is your gross margin? 26,75,000. Absolutely right. 2675. Now I will take operating income. I think there is not a single operating income. कुछ नहीं था? नहीं था ना? Then we'll go for operating expenses. What all operating expenses we have? Office and administrative. उसमें बहुत सारे आइटम्स है. क्या क्या था बताओ? ऑफिस सैलरी था, कंप्यूटर था, रेंट था, प्रिंटिंग था और स्टाफ बिल, है ना? यस और नो? लिखते जाओ. यही सारी चीजें थी. सैलरी 4 लाख, रेंट 4,000, कंप्यूटर repairs and maintenance 84,000, staff welfare 44,000, printing and stationery 400. How much is the total? Five lakh 32,400. 5,32,400. This is the total of office and administrative expense. Clear है? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Can we take another? No, sir. Wait a minute. Okay. इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था क्वेश्चंस के आप लोग एटलीस्ट प्रिंट निकाल लो. Then it will be proper practice. आप मार्क करते रहेंगे. Where it will come. देख देख के करोगे तो उतना नहीं आएगा.
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना आया? These are all selling, salesman salary, advertisement, salesman traveling, है ना? ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। बैड डेट क्या करना है? सेलिंग में रखना है या फाइनेंस में? So on the top, write a note. We are considering bad dates before answer. A selling and distribution expense. Alternatively, it may be considered as financial expense. ओके, हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारे आ जाएंगे। फिर गेट मी द टोटल। कितना है टोटल? 2,40,450. 2,40,000, 252 तो यही है रे।
4,67,250. तो यार क्या कर रहा है तू? Then फाइनेंशियल एक्सपेंसेस तो अभी एक ही बचा, बैड डेट्स भी ऊपर ले लिया, तो फाइनेंस में क्या बचा? सिर्फ एक इंटरेस्ट। दिस इज हाउ वी नीड टू प्रेजेंट। अभी देखो, इन एडमिन वी हैड फर्स्ट आइटम, few items, we have taken the total in second column. In selling, we had few items, we taken the total into second column. In finance, we did not have any other item directly, we have kept in second column. So what is the total of all these? What is the total of this? 10,49,650. इसमें क्या करेंगे? ये मेरे को क्या आएगा? ग्रॉस मार्जिन में से इसको माइनस कर देंगे. What I will get? What I will get? Net operating. Yeah, operating net profit या net operating profit तो भी चलेगा. 26,75,000 minus 10,45,650 is 16,25,350. है ना? Yes, sir. अब इसमें क्या ऐड करोगे? Non-operating income. Yes, non-operating income. Which are non-operating income we had? I think there are only few. एक डिविडेंड ऑन शेयर था और क्या था, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा है. One item. Again, it will directly come to the last column. Then non-operating expense. Non-operating expense में क्या था? एक ही है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, है ना? Again, it will come in last column. तो टोटल कितना आएगा? 60,25 plus 10 minus 125. So how much you got final net profit as? Fifteen lakh 10,350.
क्लियर है? नाउ जितने भी PNL के क्वेश्चंस है वो खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है? दैट्स एन असाइनमेंट फॉर यू ऑल। और जिन्होंने 5 टाइम्स नहीं लिखा है उनके लिए वो 5 टाइम्स कैरी फॉरवर्ड होगा। सत्यम, इन योर नोटबुक you start writing, and on this the student will get remaining 20 marks. 20 marks का एग्जाम देंगे, 20 मार्क्स मैं असाइनमेंट एंड वाइवा पे ही देता हूँ बच्चों को। ओके, so like those format was the assignment when I had given last week or this week at the beginning. वो डेट लिख देना, आज का डेट लिख देना 15 Jan। 15 Jan को मैंने क्या असाइनमेंट दिया? All vertical statement of profit and loss, solved unsolved, okay, because tomorrow there is Sunday. And जिन्होंने assignment नहीं करा था or 5 times, they need to now write 5 times. And how I will assess, you have seen just now. I'll give the speaker view. You have to put your video mode on. You have to show me in the first page whereby you have written your name and your roll number, and then accordingly I will assess those assignments. Am I clear? जो Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व होता है वो सॉल्व करो, but don't take balance sheet. Do only profit and loss. Okay? क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, यही आंसर आया ना अभी अपना, है कि नहीं? डोंट डू दिस मिसिंग वाला सब, ये सब नहीं आएगा अभी आपको, ठीक है? दैट वी विल टेक इट अप। जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी है। एज एन एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो भी प्रैक्टिस करने हैं। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करना है, ठीक है? डू द प्रैक्टिस एंड देन कम। ये देखो यहां दिया हुआ है, हो जाएगा? अरे टेल मी यस नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do it. See you next week. Till then, take care. Be at home. Be safe.